Otherwise we will proceed. So shall we proceed? Shall we proceed? Yes, sir. Okay. So I was talking about B, D, O, and H. So we have seen binary to decimal and decimal to binary. Okay. Now the next thing is we have done this two part. Now we will see how do you convert the remaining part. So for the next part, we will see binary to octal. Binary to octal. Okay. So this is the sequence which you can keep in mind, and which will also help you to understand the steps which we have to carry out for conversion the numbers. Okay. Now we will be saying the binary into octal. This is very easy. Okay, binary to octal. Now when we see into the binary to octal, let me explain you with an example. This will Sir, help. Yes. screen is not visible, sir. Oh yes, yes. मैंने screen share नहीं किया ना. Good. Yes. Now my screen is visible. Yes, sir. हाँ. तो मैं बता रहा था binary, decimal, octal, and for hexadecimal. We have studied binary to decimal and decimal to binary. Now we will study binary into octal, and we will follow this step. You also please follow this step for better understanding. Okay. So when we say binary into octal, how do you convert any binary number into octal? That is important. Okay. So I will explain you with an example. You take any example which will represent the binary number. If I'm taking the number as 101111, and you have a binary point, then again you have some binary number 011, that is a fractional part, 011, something like this. So this is to the base 2. I have to convert this into base 8. That is what we have to study now. Okay, that is binary to octal. Now this is simple. Whenever you get any binary, and if you have to convert it into octal, my question is, you tell me how many different symbols are there in octal. 8. 8. 8. That is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. So they are total 8. Now my next question is, how do you represent this 0 in terms of binary? How do you represent this 0 in terms of binary? Zero. Now you have to uh, Zero. in binary it is 0. Now tell me one thing. If I have to represent this 0, how many bits I would require in One. binary? Okay, only one. If I have to represent this 1 into binary, how many bits I require to represent this 1 in binary? One. 1. 1. So tell me that number. Tell me that binary number. One. Yes, it is 1. You are right. Tell me how many the number of bits are required to represent this 2 in binary. 2. Two. 2. Tell me the binary number. 10. 1 1 0. 0. 1 0. 1 0. Okay, 1 0. Tell me how many bits are required to represent this 3. 2. Which is that? 1 1 1. 1. 1 One. 1 1. 1. Similarly for 4, it is how many bits are required? Three. 3. 3. Which are these 3 bits? 1 0 0. 1 0 One 0. zero Hmm. zero. For 5, it is 1 0 1. For 6, it is 1 1 0. For 7, it is 1 1 1. Do you agree with this? किसको नहीं समझा? I will be able to explain it. Please ask me this. मेरा question था, if I have to represent this 0, now this 0 I have taken from octal, and this 0 is for binary. और अभी हम पढ़ने वाले हैं बाइनरी इनटू ऑक्टल कन्वर्जन. लेकिन मुझे सिर्फ ये पूछना था कि 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए हाउ मेनी बिट्स आर रिक्वायर्ड इन बाइनरी. यू सेड ओनली वन, एंड दैट इज 0.
represent 1, I would require only bit, and that is 1. To represent 2, I have to represent how many bits? 2 bits are required, and they are 1 0. For 3, it is 1 1. For 4, it is 1 0 0. For 5, it is 1 0 1. And for 6, it is 1 1 0. And for 7, it is 1 1 1. It is 1 1 1. Now, with this understanding, if my question is, how many maximum number of bits are required to represent octal number? What is your answer? 3. 3. Yes, it is 3. How do you get 3? You get 3 how? Because आपको पता चला है कि to represent this 3, sorry, to represent this 7, I would require maximum 3 bits. You can see here 3 bits. 2 बिट में काम होगा नहीं होगा, 1 बिट में काम होगा नहीं होगा, 3 बिट में काम होगा 4 बिट में काम होगा होगा ना. होगा. So what are the, then what is the representation for 7? 0 1 1 1. It is 0 1 1 1. You are right. It is 0 1 1 1. So my question is, you require minimum 3 bits to represent octal. That is the conclusion. That is the conclusion. Again, I'm repeating. The minimum number of bits which are required to represent the numbers in octal are 3. So if that is the case, if I required minimum 3 number of bits, so how do you represent 0 now? This 0. This 0. 0 0 0. Very good. It is 0 0 0. How do you represent this one? How do you represent this one in binary? 0 0 1. Very good. How do you represent this 2 in binary? 0 1 0. 0 1 0. 0 1 0. Very good. How do you represent this 3 in binary? 0 1 1. 0 1 0 1 1. And this is already 1 0 0. This is already 1 0 1. And this is already 1 1 0. 1 1 0. Okay. So with this understanding कि आपको अभी ये बात पता चली है कि to represent my octal number in binary, I would require minimum 3 bits and maximum you can take 4 5, because जो bit नहीं पता, जो जिस bit की जरूरत नहीं है उसको वहाँ पे हम 0 रखने वाले. लेकिन मुझे एक बात पता चली है कि I would require minimum 3 bits to represent my octal number. With this understanding, what we have to do when you convert a binary number into octal, हमको वही करना है. क्या करना है? See to the example now. Come back to the example. In this example, you have to make the groups of 3, starting from the binary point. Go towards the left, make the group of 3. It is 3, this group. Then make the group of 3, then this is the 3 group, the group of 3. Okay, now only 1 is remaining now. I have to make a group of 3. So I do not have the remaining symbol or digits. So you have to add just 0 0 and you make a group of 3. Similarly, go towards the fractional part. Start from the binary point. Again, you make a group of 3. This is a group. Again, you make a remaining group. So you have this as a group. So once you make a group of 3, am I audible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. हाँ sir. हाँ. Yes. See, I'm using my hotspot. अगर फोन आता है ना, किसी का कॉल आता है ना, तो I think I'd get disconnected. So if somewhere if I get disconnected, ना, please let me know. Okay. So just a minute.
Yes, am I audible now? Yes, sir. Sorry, there was an urgent call, so I have to pick up. So because of that, I lost the connection. I have rejoined. My screen is visible. No, sir. No, sir. Wait. Just now it is visible. Yes, sir. Okay. So come back to the explanation now. I was explaining you how do you convert the binary into octal. I have told you that from the binary point, go towards the left as well as go towards the right and make a group of three bits. If you find any one single bit alone or only 2 bits, then you have to append zero. As I have told you here. Okay, as I have told you here. Same thing. If in the fractional part also, if you find any digit alone or 2 digits, then you have to append zero towards the right. Okay. So as far as fractional part is concerned, I do not find any single digit or 2 digits. So there is no appending I have done here. Only one appending I have done here in this particular integer part. Once that is done, then after the grouping of this, you have to give the corresponding octal number. So here 011 corresponds to what in octal? If you see in the table, 011 is, can you see here 011? It represents what? It represents 3 in octal. Am I right? So this is 3. Similarly, what is 011? This is also 3. What is 001? It is 1. One. And you have again a octal point. This is octal point because I am converting binary to octal. What is 011? Here it is also 3. What is 011? This is also 3. So ultimately I am getting the number as 133 dot, that is octal point 33, and to the base 8. So here important thing is, why I have make a group of 3? Why not 2? Why not 4? Because I am converting into octal, and you know that the reason I have explained you just now, that all the octal numbers, the minimum 3 bits are required. Now in this case, you can say 3 bits. Why 3 bits? Because 7 I would require 3 bits, and if you say maximum will vary. It may be 4, 5, 3, 5, 6, 7, 8. Okay, it depends upon the what type of a question is asked. Okay, तो आपको पता है, for representing any octal number you would require minimum 3 bits. तो इसलिए मैंने 3 का ग्रुप बनाया. So that is the explanation. Now this type of question, viva question can be asked कि 3 का ग्रुप क्यों बनाया, 2 का क्यों नहीं बनाया, 1 का क्यों नहीं बनाया, 4 का क्यों नहीं बनाया. So this is a proper explanation. Is it fine to everyone? Now? Yes, sir. Okay. So with this understanding, we have completed binary to octal. Now we will see octal to binary. Now this is also simple. When you say octal to binary conversion, that is also simple. How come? You take any number now. Octal number. If I'm taking octal number of 137 dot octal dot or octal point 54 137.54. This is an octal. I have to convert into binary now. Here also it is the same. Now you have to represent every symbol into its corresponding binary number. How come? How do you represent 7 in octal now? Tell me fast. It is 111. 111. How do you represent 3 in octal? In binary? 0111. 0111. How do you represent this one? It is 001. Binary point.
binary point equivalent to octal point. How do you represent 5 in binary? It is 101. 101. How do you represent 4 in binary? 100. Very good. So this comes to be your binary. Khatam. This comes to be your binary. Okay. This comes to your binary. So this is the, I think, easiest way, easiest conversion from binary to octal and octal to binary. Similarly, there is the easiest conversion for binary to hexa and hexa to binary. लेकिन हम वहां तक नहीं पहुंचे, इसलिए हम वो पार्ट बाद में लेते. लेकिन एक काम करता हूँ, with the same understanding I will also explain you binary to hexa. ओके, क्योंकि इसी में वो पार्ट भी हो जाएगा. ओके, तो हमने क्या देखा है? हमने बाइनरी टू ऑक्टल देखा है और अभी हमने ऑक्टल टू बाइनरी भी देखा. Do you require any more example to explain you octal to binary and binary to octal now? Can we proceed further directly? किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क मी. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू फॉर इन द फर्स्ट लेक्चर, do not ask me to continue unless and until you are satisfied with the explanation, you are comfortable with the explanation, and you are confident with the explanation. So shall we proceed further, or do you want any more explanation for this? I am waiting for your acknowledgement. सर हाँ, सर वो सेकंड पेज दिखाना है. सेकंड पेज. ओके, यस. ओके सर, थैंक यू. ठीक है ना. 7 को 111, 3 को 0111, 1 को 1001. Octal decimal, binary, sorry, octal point and binary point. Then 5 101, 4 100. ओके, आप मुझे बोलोगे कि सर 7 को आपने 3 इसमें क्यों बनाया? क्योंकि मैंने इसका एक्सप्लेनेशन पहले ही बताया. मैं ये 7 को ऐसे भी लिख सकता था. कैसे लिख सकता था? 0, सॉरी, यस, 0111. लेकिन मुझे 4 का ग्रुप नहीं बनाना है, मुझे 3 का ग्रुप बनाना है, क्योंकि ये ऑक्टल का मैंने आपको बताया था कि मिनिमम बिट्स रिक्वायर ऑक्टल में कितने होते हैं. मैंने बताया थे 3 है, तो इसलिए 3 ही के फॉर्मेट में लिखना है, 4 के फॉर्मेट में नहीं लिखना. इज इट फाइन? Is it fine? Yes sir. Yes, sir. Okay. I think with the same, on the same ground, we will also take binary into hexa and hexa into binary. Okay. क्योंकि इसी में आपको वो भी चीज समझ में आएगी, इसमें आपको वो भी चीज समझ में आएंगी. So I will take binary into hexa, binary into hexa. Now here also same thing. Hexa आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D and F. So I will not waste much of the time here now. Directly I can show you. My question is, these are the hexadecimal numbers which are also called as alphanumerical. And if I want to represent this hexadecimal into binary, how many minimum number of bits I have to I want or I require to represent the hexadecimal? Minimum number of bits. 4. It is 4. वो कैसे पता चला? इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? F. F का मतलब आपको पता है, डेसिमल नंबर में F का मतलब क्या होता है? It is 15. 16. It is 16. So if I have to represent this 16 in binary, tell me 16 decimal into binary. ये तो हमने पहले ही किया था, ये कन्वर्जन तो हमने पहले सीखा है. तो मुझे 16 का कन्वर्जन बताओ बाइनरी में. सर 15 आएगा ना? Sorry, yeah, it is 15. Sorry, it is 15. So this 15 in decimal, how do you मैंने ये डेसिमल टू बाइनरी पहले सिखाया मैंने, तो मुझे बताओ ये 15 का इक्विवेलेंट बाइनरी क्या है? 1111. Yes, it is 1111. It is 1111. I don't know why you are taking much of the time. ये कन्वर्जन मैंने पहले ही पढ़ा है आपको, डेसिमल टू बाइनरी. ये 15 है, इसको मुझे चाहिए बाइनरी में.
आपको बाइनरी का वेट पता है, यहाँ पे सिर्फ इंटीजर वैल्यू है, इसमें फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं है। तो यू नो द वेट क्या है, 1 2 4 8 16। अभी मुझे 15 चाहिए, 15 चाहिए तो मुझे क्या क्या ऐड करना पड़ेगा, मुझे 1 और 2 को ऐड करना पड़ेगा, 2 और 3 4 को ऐड करना पड़ेगा, और बाद में 8 को भी ऐड करना पड़ेगा। तो जिन लोगों को मुझे ऐड करना है वहां पे मुझे 1 1 1 1 चाहिए, 16 की जरूरत नहीं है। सो दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट योर बाइनरी, दैट इज 15 डेसिमल इनटू बाइनरी 1 1 1 1। okay, because 8 plus 4 plus 2 plus 1 gives you 15, 8 plus 4 12, 12 plus 2 14, 14 plus 1 15, so 1 1 1 1 gives you binary. So f, which is in hexadecimal, can be represented into binary as 1 1 1 1. Similarly we will go for, so can I say maximum 4 bits are required to represent the hexadecimal number? Yes. Minimum 4 bits, yes. So here for 0 it is 0 0 0 0, for 1 it is 0 0 0 1, for 2 it is 0 0 1 0, for 3 it is 0 0 1 1, for 4 it is 0 1 0 0, for 5 it is 0 1 0 1, for 6 it is 0 1 1 0, for 7 it is 0 1 1 1, for 8 it is 0, no, 1 2 4 8, it is 1 0 0 0, for 9 it is 1 0 0 1, for a, the a is nothing but 10 in decimal, so 10 can be represented as 8 9 10, so 1 0 1 0. For b it is 11, 11 means 8 9 10 11, 1 0 1 1. For c it is 10 11 12, so 12 can be represented as 1 1 0 0. For d, third, that is 14, 14, so 14 can be represented as 10 11 12 12 13 14, 1101. 1101. हाँ 1110 बराबर है, नहीं सर 1101. हाँ 1101 बराबर, 1101 बोले, ये 1 बोले तो 8, ये 1 बोले तो 4, 8 प्लस 4 12, 12 ए बी सी डी, सॉरी मैं ई Sir, बोल E. गया, हाँ ई बोल गया था बराबर। हाँ, तो 1101, अब ई को कैसे लिखोगे, 1110. वेरी one गुड, one 1 one. 1, हाँ अभी बराबर, अब बराबर है। सो दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट, ये देखो ये आपके जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये सब हेक्साडेसिमल नंबर है और उसके इक्विवेलेंट बाइनरी है। इसके पहले मैंने जो दिखाया था ये सब ऑक्टल नंबर है और उसका इक्विवेलेंट बाइनरी है। बाइनरी रिप्रेजेंट थ्री डिजिट्स, तीन के ग्रुप लगता है या 3 डिजिट्स लगते हैं, वैसे ही के लिए 4 बिट्स लगते हैं, 4 बिट्स लगते हैं, 4 bits लगते हैं। On the similar ground, I will take an example. मुझे आपको क्या सिखाना है, binary into hexa. So similarly, if I have a binary number 1011011, decimal binary point 011011111, ये नंबर है, ये मुझे कन्वर्ट करना है बाइनरी इनटू हेक्साडेसिमल। हम मुझे अभी ग्रुप कितने के बनाने पड़ेंगे, 4. Four. yes 4. Okay. Start from the binary point towards the left and towards the right, towards the left and towards the right. So make a group in the integer part, this is a one group, यहाँ पे 3 ही है, एक नहीं है, append 1 0, make a group of one more, go towards the right hand side from the binary point, make a group of 4, ये एक ग्रुप है। और कितना ग्रुप होता है, ये ग्रुप बन जाता है। एक ये यहाँ पे there is one bit which is alone, how many zeros I have to append, I have to append 3 zeros, yes I have to append 3 zeros to make this one as a group, khatam. Then this, tell me the equivalent of 1011 in hexa, tell me the representation of this, tell me the representation of this, tell me the representation of this, and tell me the representation of this. So we will start with this 1011. What is 1011? B. B. B, B या D? B Buffalo. B. B for Bombay, बराबर है? Yes sir. Yes, sir. Okay, B. Tell me the representation of this. 5. 5. 5. 5. Tell me the representation of this.
6. 6, right? Tell me the representation of this. F. F. And tell me the representation of this. 8. 8. हाँ, ये कुछ रॉकेट साइंस नहीं किया, ये हमने कहाँ से लिया, हमने ये यहाँ से लिया, ये टेबल से लिया, ये टेबल से लिया, ओके ना। सिर्फ आपको याद रखना है 1 2 4 8 16 32 एंड सो फोर्थ। लेकिन हेक्सा में मुझे 4 ही बिट चाहिए, तो 1 2 4 8, 1 2 4 8, और वो हिसाब से ये मैंने लिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1010 है और मुझे अगर चाहिए कि इसका इक्विवेलेंट क्या है हेक्साडेसिमल में, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, ये 1 कौन से पोजीशन पे है, एक 1 के पोजीशन पे, सॉरी, ये 1 के पोजीशन पे है और एक 4 की पोजीशन, सो 4 + 1 5, यू गेट हियर 5। अभी यहाँ पे देखो 1 1 1 1 1 बोले तो 1 है 2 की पोजीशन और 4 की पोजीशन, 8 की पोजीशन पे 0 है, तो 8 नहीं लूंगा मैं, 4 + 2 + 1 7, 7 इज हियर, okay, so you have to understand the weights, you have to understand the weights and you will get the answer, okay. Is it fine to everyone? Have you understood this? So this is my, so there is a hexadecimal point here, there is a hexadecimal point here, and the base becomes 16, and the base becomes 16. Is it fine to everyone? Is it fine to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. Yes, sir. With the, on the similar ground now again, ये हो गया बाइनरी टू हेक्सा, ओके, ये हो गया बाइनरी टू हेक्सा। तो अभी हमको क्या देखना है, ये हमने क्या अभी पढ़ा है, बाइनरी टू हेक्सा। अभी हमको क्या पढ़ना है, हेक्सा टू बाइनरी। अभी वही बात है। सो देयर इज नथिंग न्यू इन दिस, देयर इज नथिंग न्यू इन दिस, जस्ट यस। सो नाउ यू टेक एनी नंबर, आई विल टेक हेक्साडेसिमल नंबर। अब उसको मुझे बाइनरी में चाहिए, वही सेम थिंग, मैं लेता हूँ ए, मैं लेता हूँ बी, मैं लेता हूँ सी, मैं लेता हूँ डी, और ये यहाँ पे है हेक्साडेसिमल पॉइंट। यहाँ पे मैं लेता हूँ ई, और यहाँ पे लेता हूँ एफ। कैन आई से दिस इज माय हेक्साडेसिमल नंबर? यस और नो? हाँ या ना? Yes, sir. Yeah, obviously this is hexa because every digit or symbol is a part of the hexadecimal number. Hexadecimal is your alpha numerical. अल्फा क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहाँ पे ए बी सी डी ई एफ है, इसलिए उसको अल्फा बोलते हैं। न्यूमेरिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहाँ पे नंबर है 0 से लेकिन, ओके, सो दिस इज एन हेक्साडेसिमल नंबर। अभी इसका भी वही करना है, कितने का ग्रुप बनाना पड़ेगा? जो रिप्रेजेंट करना है, तो हाउ मेनी बिट्स आई हैव टू यूज फॉर एवरी सिंबल? 4. 4. 4. We will start from A now. A is represented as, फटाफट बताओ। 1010. B, 1011. C, 1100. 1100. 1100। ये बोलने को टाइम नहीं होना चाहिए, जैसे बोला वैसे आपको आना चाहिए। भी जाओ। D को कैसा बोलेंगे? 1101. 1101. E, अभी देखो यहाँ पे आएगा बाइनरी पॉइंट, यहाँ पे आएगा बाइनरी पॉइंट। E को कैसे लिखोगे? 1110. 1110. 1110। F को लिखोगे 1111। खत्म हो, बेस 2 खत्म। दिस इज आंसर, ओके, दिस इज आंसर। So I will go, I will not waste much of, this is very easy for you to understand. तो हमने दोनों भी सीख लिए हैं, बाइनरी टू ऑक्टेल, ऑक्टेल टू बाइनरी टू हेक्सा, हेक्सा टू बाइनरी, ओके। so we have done this. अब क्या बाकी है? we will, yes, ठीक है, हमने बाइनरी टू हेक्सा किया और हेक्सा टू बाइनरी किया, ये सब हो गया। अभी क्या बाकी है? now we have to see with decimal to octal, डेसिमल टू ऑक्टेल हो जाएगा, बाद में फिर हम पढ़ेंगे ऑक्टेल टू डेसिमल, ऑक्टेल टू डेसिमल। वी विल स्टडी हियर नाउ डेसिमल टू ऑक्टेल, डेसिमल टू ऑक्टेल। वी विल सी हाउ डू यू कन्वर्ट नाउ दिस डेसिमल टू ऑक्टेल।
आर यू देयर विथ मी? सब लोग हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस। अभी देखो, हमने जब स्टार्टिंग में जो कर रहे थे कौन से कन्वर्जन, जब हमने देख रहा था कि हमको अगर डेसिमल टू बाइनरी करना है, तुरंत मुझे बताओ क्या करना पड़ता है? डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी कैसे क्या करना पड़ता है? फास्ट, डेसिमल टू बाइनरी Divide by 2. By 2. डिवाइड बाय 2, डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 2। तो आपने बताना चाहिए डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। डेसिमल टू बाइनरी डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, डेसिमल टू बाइनरी डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, डेसिमल टू ऑक्टेल डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8, डेसिमल टू ऑक्टेल डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8। Is it right or wrong? Yes, it is right. So when you convert decimal to octal now, you have to divide by 8 as well as multiply by 8. Divide by 8 as well as multiply by 8. Okay. So that is successive division by 8 and successive multiplication by 8. Now you take an example now. When you take an example, that time it will be more clear. Now if I give an example, you take a decimal number. Suppose I'm taking a decimal number as, I won't take much of the bigger number. If I take a number as 24.32, this is my decimal. I have to know what is the octal, that is 8. Now divide by 8 is applicable for integer part. Multiply by 8 is applicable for fractional part. So we will do first the integer part. Tell me 28, so sorry 24 divided by 8. Tell me now. 3. 8 3 are 24. What is the remainder? 0. 30. 30. 30. Yes, it Yes, is sir. 30. मुझे बताओ सक्सेसिव डिवीजन में हम ऊपर से नीचे जाते हैं या नीचे से ऊपर जाते हैं? नीचे नीचे से से ऊपर। ऊपर. हाँ, नीचे से ऊपर जाते हैं तो ये 3 को लेना पड़ेगा और ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है? तो हम ड्यूरिंग द जर्नी इट इज 30. ओके, अंडरस्टूड. सो ये जो ओके, वी विल कीप एज इट इज. वी विल गो टू द नाउ fractional part. Fractional part is 0.32. Don't forget to mention 0.32. Multiply by 8. Do it on calcium. Tell me. Do it on calcium. Tell me. 2.56. 2.56. 2.56. I am interested in the integer part, so keep this 2 here. And I have to multiply again by 0.56 into 8. Tell me. 4.48. 4.5. 4.48. I am interested in integer part, keep it aside. 4. Multiply again by 0.48. Yes. How much? 3.84. 3.84. 84. I'm interested in the integer part. Keep it again here. This will go on. You can take only 3 or 4 digits. There is no harm. Whether I should go from bottom to top or top to bottom in the successive multiplication. Top to bottom. Yes, top to bottom. So arrow will come here. Aisa. Now final answer is here. Final answer is here. The final answer is 30 octal point, and what is the integer part? Integer part is 243. 243. Integer part is 243 and base is 8, and the base is 8. This is your answer. 30.243. 30.243. Have you understood this now? Sir, can you once again give the वो सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन वाला समझा दीजिए ना. सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन इसी के इसी ये एग्जांपल का या हाँ यही सेम. हाँ यही ना. नहीं यही Okay. वाला. हाँ हाँ ठीक. देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमको देखना पड़ता है कि डेसिमल पॉइंट के इंटीजर पार्ट क्या है और फ्रैक्शनल पार्ट क्या है.
इंटीजर पार्ट पे क्या ऑपरेशन करना है और फ्रैक्शनल पार्ट पे क्या ऑपरेशन करना है, हमेशा इंटीजर पार्ट पे डिवाइड बाय 8 का ऑपरेशन करना है, डिवाइड बाय 8 का ऑपरेशन करना है, और फ्रैक्शनल पार्ट पे हमेशा मल्टीप्लाई बाय 8 का ऑपरेशन करना है। ओके, तो ये हमने कहाँ पे पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था जब हम डेसिमल टू बाइनरी का कर रहे थे। वो बाइनरी था, बेस 2 था, तो वहां पे था डिवाइड बाय 2 का ऑपरेशन और मल्टीप्लाई बाय 2 का ऑपरेशन। यहाँ पे है डेसिमल इनटू ऑक्टेल, तो यहाँ पे ऑपरेशन रहेगा डिवाइड बाय 8 एंड मल्टीप्लाई बाय। तो ये डिवाइड बाय 8 बोले तो कैसा, ना आई एम टेकिंग 24, you have to divide it by 8. I am interested in the remainder. I'm interested in the remainder. I'm interested in the remainder. So यहाँ पे क्या 24 मैंने एक easy वाला लिया था, so it is 8 3 था 24, 8 3 था 24. I cannot proceed further and I have to go from bottom to top. हमेशा सक्सेसिव डिवीजन में बॉटम टू टॉप अप्रोच रहता है और मल्टीप्लीकेशन सक्सेसिव मल्टीप्लीकेशन में टॉप टू बॉटम का अप्रोच रहता है। तो ये बॉटम से टॉप का अप्रोच में क्या है, ये 3 भी लेना पड़ेगा और बाद में ये 0 भी लेना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने ये 3 0 यहाँ पे ले लिया। और ये जब सक्सेसिव मल्टीप्लीकेशन में क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाइड बाय 8, सो 0.32, ये वाला 0.32 मल्टीप्लाई बाय 8, इट इज 2.56। आई एम इंटरेस्टेड इन द इंटीजर पार्ट, तो इंटीजर पार्ट मैंने अलग से लिख दिया। और ये फ्रैक्शनल पार्ट क्या है 0.56, 0.56 अगेन मल्टीप्लाई बाय 8, आंसर कम्स टू बी 4.48। आई एम इंटरेस्टेड इन अगेन इन इंटीजर, तो उसको अलग से रख दिया। और जो फ्रैक्शनल पार्ट है 0.48, फिर से इसको मल्टीप्लाई किया 8 बार, 8 टाइम मल्टीप्लाई बाय 8, इट कम्स टू बी 3.84। हियर आई एम इंटरेस्टेड इन द इंटीजर पार्ट, 3 को अलग से रख दिया। अगेन आई कैन 8 फ्रैक्शनल पार्ट दैट इज 8.54 0.84 मल्टीप्लाई बाय 8, जो कुछ यहाँ पे आएगा फिर से वहां का इंटीजर मुझे अलग से लिखना पड़ेगा, एंड सो फोर्थ। So you can take at least 3 digits, 3 symbols, and you have to go from top to bottom. So it comes to be 243. So 243 is available here. 243 is available. So the final answer is 30.243. 30.24. Now you understood? Yes, sir. Yes. तो इसलिए मैंने क्या बताया था, हमेशा याद रखना, आंख बंद करो एंड लिसन। डेसिमल इनटू बाइनरी और डेसिमल इनटू ऑक्टेल, डेसिमल इनटू बाइनरी और डेसिमल इनटू ऑक्टेल। अभी यहाँ पे और एक हम बोल सकते हैं, आई कैन नाउ कंक्लूड। आई वांट एवरीवन ऑफ यू टू क्लोज योर आईज एंड जस्ट लिसन टू मी व्हाट आई एम सेइंग। कीप योर ईयर्स ओपन एंड लिसन टू मी। सो व्हेनेवर यू कन्वर्ट डेसिमल इनटू बाइनरी और डेसिमल इनटू ऑक्टेल और डेसिमल इनटू हेक्सा, अभी ये हेक्सा वाला ऑटोमेटिक आ गया क्योंकि 2 चीजें हमने पढ़ी, तो तीसरा मैं एक कॉमन ग्राउंड्स पे मैं आई कैन नाउ कमेंट नाउ। क्या मैं बोल सकता हूँ अभी, अगेन लिसन, डेसिमल इनटू बाइनरी, डेसिमल इनटू ऑक्टेल या फिर डेसिमल इनटू हेक्सा, यू हैव टू यूज सक्सेसिव डिवीजन एंड सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, फॉर बाइनरी टू इनटू डेसिमल इनटू बाइनरी, divide by 2 multiply by 2, decimal into octal, divide by 8 multiply by 8, decimal into hexa, divide by 16 multiply by 16. Okay, divide by 16 and multiply by 16. Okay, तो हम यहाँ पे वही करने वाले, अब यहाँ पे यही करने वाले। तो हमने क्या क्या पढ़ा है, मैं फिर से इसके पास जाऊंगा। यहाँ पे हमेशा वापस आना पड़ता है ताकि आपको समझ में आए। मैंने आपको अभी पढ़ाया है डेसिमल इनटू ऑक्टेल। अभी यही ग्राउंड्स पे मैं आपको सिखाऊंगा डेसिमल इनटू हेक्सा, डेसिमल इनटू हेक्सा, डेसिमल इनटू हेक्सा। ओके, डेसिमल इनटू हेक्सा। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ डू यू डू दिस नाउ। मैंने क्या बताया था, डेसिमल इनटू हेक्सा, वही डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टेल, डेसिमल टू हेक्सा, डिवाइड मल्टीप्लाई, डिवाइड मल्टीप्लाई। सो डिवाइड बाय 2, divide multiply by 2, octal divide by 8 multiply by 8, in hexa divide by 16 and multiply by 16। तो वो जब मैं करूंगा तो वो कैसे करूंगा, see here now, all of you pay attention now। अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको, डेसिमल इनटू हेक्सा।
You will take an example now. We will take an example. Again, I will take an example. For example, if I'm taking 2177, ओके. फ्रैक्शनल पार्ट का फिलहाल छोड़ दो. नहीं, मैं फ्री, ठीक है, नो, आई विल टेक फ्रैक्शनल पार्ट ऑल्सो. वो फिर आपको कैसे एक उसी में आपको सब चीजें समझ में आएंगी. आई एम टेकिंग 765. नाउ दिस इज माय डेसिमल नंबर. I have to convert into hexadecimal. तो वही क्या, वही divide by 16 and multiply by 16. हेक्साडेसिमल का बेस क्या है, 16 है, तो डिवाइड बाय 16 एंड मल्टीप्लाई बाय 16. अब डिवाइड बाय 16 का कैसा है, डिवाइड बाय 16 का सिनेरियो क्या है, वो ऐसा है. मैं एक काम करता हूँ. ओके, मैं आई विल टेक द फ्रेश पेज. नो, अदरवाइज लेट इट बी 2177 16. Yes. So 16 divided 2177 divided by 16. You tell me what is the quotient and what is the remainder. Fast. What is the quotient? What is the remainder? Am I audible? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. बताओ 2177 को मुझे डिवाइड करना है 16 से, तो डिवाइड जब करूंगा तो क्वोशिएंट क्या आएगा और रिमाइंडर क्या आएगा. फाइनल आंसर नहीं चाहिए मुझे. ये 2177 को डिवाइड करो और मुझे बताओ कि क्वोशिएंट क्या आएगा और रिमाइंडर क्या आएगा. So quotient 129. हाँ, कोई एक बताओ. So 129. 129. Tell me the remainder. 13. Yes, ये देखो रिमाइंडर अलग से लिख दिया. ओके, 129 क्वोशिएंट और 13 इज द रिमाइंडर. अभी यहाँ पे एक ट्विस्ट ऐसा है, 13 है तो मैं 13 डायरेक्टली लिखूंगा क्या. नाउ दिस 13 इज इन डेसिमल. दिस 13 इज इन डेसिमल. You tell me the equivalent of 13 in hexadecimal. Again, I am repeating, this 13 is a remainder, but this 13 is in decimal. I want the equivalent of 13 in hexadecimal. D. Yes, yes, D. it is D. So write D in bracket. Very good. D. Hexadecimal is alphanumerical. 13 is in decimal. I want its corresponding hexadecimal number. So it is D. It is D. You are very right. Now again divide by 16. So, Yes. Sorry. 16 into 146 हुआ ना, 2176 आ रहा है. हाँ सर. सर 132 होगा शायद. 135 So है. 135. 136. 136 sir. 136. 136. क्वोशंट आता है. रिमाइंडर इज अभी 1, बराबर है? सर. So remainder 3 आ रहा है. And One. remainder is 1. 1. ऐसा. हाँ सर. हाँ सर. ओके, ठीक है. लेकिन ठीक है, आपको अब यहाँ पे ये बात पता चली कि अगर डेसिमल रिमाइंडर डेसिमल में आता है, उसका इक्विवेलेंट मुझे हेक्साडेसिमल में लेना. ठीक है ना. तो आपने क्या मुझे कहा कि 136 आता है और सर रिमाइंडर 1 आता है. अभी बराबर है? Yes sir. ओके. ठीक है. Yes sir. अभी 136 divided by 16. You tell me the quotient and tell me the remainder. 8 sir. 16 8 128. 128. Tell me the remainder. 8. 8 sir. This 8 is a hexadecimal number. Yes or no? Yes. हाँ, तो इसको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर 13 आता था तो 13 हेक्साडेसिमल नंबर है क्या? इट इज अ डेसिमल नंबर. सो 13 का इक्विवेलेंट क्या है? डी. तो हमको डी लेना पड़ता था. ओके, सो दैट इज द केस. सो अगेन डिवाइडेड बाय 16.
So tell me 128 divided by 16. Tell me the answer. Sir, 8 remainder is 0. sir, 8. 120. हाँ, क्वेश्चन कितना है? सर क्वेश्चन डेट आया हाँ, क्वेश्चन हाँ इज सर, तो 128 की 136 को जगह 16 से डिवाइड करेगा, क्वेश्चन तो 8 आएगा ना। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। नहीं 128 की जगह पे 8 चाहिए सर। तो क्वेश्चन का रिमाइंडर तो 128 की जगह पे 8 लिखो। अच्छा 128 की जगह पे 8 लिखना है। हाँ, 16 8 हाँ सर। 128। Okay. So 136 quotient is 8, and what is the remainder then now? 8। तो रिमाइंडर 8 ही है। हाँ, रिमाइंडर 8 ही है ना, ठीक है, ओके। रिमाइंडर इज 8। अभी ठीक है? अभी एक बराबर है? यस सर। हाँ, अभी ये मेरा Yes. मेरा क्वेश्चन यहाँ पे 8 आया, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन 8 आया। सो इसको और डिवाइड कर सकता हूँ 16 से? नहीं कर सकता हूँ। ओके, तो ये मुझे इरेज करने दो और ये मुझे 8 ऐसा लिखने दो। नाउ इट इज फाइन नाउ? Yes or no? Can I further divide by 16? Can I further divide by 16? Yes No, or no? sir. No. No, sir. So No, No, sir. now go from bottom to top. So bottom to top approach is this. So tell me what will come into the integer part now. Tell me the integer part. It is 881. 881. very good. It is 881, and there is a hexadecimal point. तो ये हो गया मेरा इंटीजर पार्ट। नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस 2177। ओके, now we have to do with the fractional part. So fractional part is 0.765 multiply by 16. Please do it on the calc and tell me the answer. 12.24। 12.24 बराबर है 12.24। यस सर। हाँ, अभी ये देखो यहाँ पे Yes, sir. 12.24 है। आई एम इंटरेस्टेड इन द इंटीजर, तो ये इंटीजर मैंने यहाँ पे 12 लिखा, लेकिन 12 इज इन द हेक्सा? नो, 12 is in the No. decimal. You tell me the hexa of equivalent of 12. C. C3। C, sir. हाँ C, ये देखो C यहाँ पे लिखा हुआ है। ये यहाँ पे भी लागू होता है जब हम डिवीजन करते हैं तो, और हम जब सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं तो यहाँ पे भी वही लागू होता है। सो इट इज 12 इज नथिंग बट C। सो C है, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा। अगेन मल्टीप्लाई बाय 0.24, दैट इज अ फ्रैक्शनल पार्ट। ये देखो ये वाला मल्टीप्लाई बाय 16। टेल मी द आंसर फास्ट। 3.84. 3.84। ये इंटरेस्टेड इन इंटीजर पार्ट 3। यस 3 इज हेक्साडेसिमल, सो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। फिर से 0.84 ले लो। 0.84 मल्टीप्लाई बाय अगेन 16। बताओ आंसर। 13.44। यस 13.44। ये 13 मैंने अलग से लिखा, लेकिन 13 इज इन डेसिमल, सो कन्वर्ट इनटू हेक्सा, सो इट बिकम्स D। वेरी गुड। अभी ऊपर से नीचे जाना है, नीचे से ऊपर जाना है? ऊपर से नीचे। ऊपर से Yes, नीचे। ऊपर से नीचे। तो ऊपर से नीचे जाऊंगा तो यहाँ पे बताओ क्या लिखूं? C3D। C3D। वेरी गुड। C3D। दैट इज C3D। दिस इज आंसर। ओके, C3D is the answer. So this is the 881.C31 is the corresponding hexadecimal equivalent of 2177.765. 2177.765। ओके, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज हमको यही पर देखनी है कि जब हम डेसिमल इंटू बाइनरी, डेसिमल इंटू ऑक्टल या डेसिमल इंटू हेक्सा करते हैं तो सक्सेसिव डिवीजन, सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन याद रखना है। किससे डिवाइड करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, इट डिपेंड्स अपॉन हमको नंबर कौन से नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। अगर बाइनरी में करना है तो 2, अगर ऑक्टल में करना है तो 8, अगर हेक्साडेसिमल में करना है तो 16। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम सक्सेसिव डिवीजन करते हैं तब डिवीजन तब रिमाइंडर क्या आता है, वो अगर
वो पर्टिकुलर सिंबल कैटेगरी में आता है तो गुड, अदरवाइज इट्स इक्विवेलेंट हमको लेना है, जैसे हमने यहाँ पे देखा है। वैसे ही अगर हम सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और हमारा जो इंटीजर पार्ट है मल्टीप्लिकेशन करने के बाद वो अगर वो पर्टिकुलर सिंबल में नहीं आ रहा है नंबर सिस्टम के, तो उसके नंबर सिस्टम के हिसाब से उसका इक्विवेलेंट हमको लेना है। जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा है 12 का 12 इज अ डेसिमल, इसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल इज सी, और 13 इज अ डेसिमल, उसका इक्विवेलेंट इज हेक्साडेसिमल इज डी। ओके, और हमने ये भी सीखा है कि सक्सेसिव जब डिवीजन लेते हैं तो रिमाइंडर हम नीचे से ऊपर लेना पड़ता है, और सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन में हमको जो भी इंटीजर वैल्यूज होती है वो हमको ऊपर से नीचे लेनी होती है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट, प्लीज आस्क बिफोर आई वाइंड अप। इज इट फाइन? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? No, sir. नो। ओके, बिफोर आई गो अगेन मुझे ये बनाने दो। क्या बनाने दो? ये बनाने दो। बाइनरी, सॉरी, बाइनरी, देन डेसिमल, देन ऑक्टल, देन हेक्सा। ओके, हमने ये पढ़ा, हमने ये पढ़ा, आज हमने यहाँ से ये पढ़ा, बाद में हमने यहाँ से ये भी पढ़ दिया, बाद में हमने ये भी पढ़ा, और उसके साथ हमने ये भी पढ़ लिया। हाँ या ना? यस और नो? Anything addition, anything subtraction in this figure? I am waiting for your answer. Yes, am I audible? मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, तो ये जो मैंने कन्वर्जन बताए ये बराबर है, यानी अब तक जो पता है इसमें कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन है अब तक ये कन्वर्जन? यस और नो? नो सर, करेक्ट है। बराबर है ना? हाँ हाँ हाँ, तो मुझे यही चाहिए था कि अब तक हमने ये कन्वर्जन देखे, ये जो एरोज दिख रहे हैं आपको, अब तक हमने ये सीखे। ओके, so I think in the next lecture I will be able to explain you the remaining part. Okay, with the remaining part. Before I go, let me check attendance who I can you. नितिन सर आए थे क्या अटेंडेंस लेने?